Uh, Good morning, students, and welcome to the pharmacognosy class. Yesterday, in this lecture of pharmacognosy, we have studied about the uh, different process of extraction, different methods of extraction, and we have discussed about the different uh, techniques in which we have studied about. I'm going a little back. We have studied about infusion, decoction, digestion, maceration, its process, types of maceration, then simple maceration, its theory. Now we are going into theories of maceration. What are the different theories of maceration? The first theory is Schizomann's diffusion theory. The rate of average theory states the rate of extraction depends upon the rate of diffusion, and that is soaking. You can say not only the rate of diffusion but also the rate of dissolution of substance in the solvent critically affect the rate of extraction. Okay, so not only the rate of diffusion, how much amount of the menstruum, the solvent goes into the plant cell, it also depends upon the rate of dissolution of substance with the help of that solvent process, and this depends upon the capillary theory, Karnowski's capillary velocity theory, and it states that the rate of extraction as a function of the rate of flow into the capillaries, that how much amount of the solvent that flows to the capillary, that is what determine the rate of dissolution of the substance. Okay, and the Scott-Coles theory states that C is equals to AMQ, where C is the concentration of macerate. That macerate is the amount of drug that dissolved by the solvent. M is the weight of solvent used per quantity of the drug, that is in kg, and A and Q are the constant. Factor affecting maceration. First, solid solvent ratio. Yield decreases with constant quantity of solvent and the increasing proportion of the drug material. Okay, so this is very clear कि अगर आपकी solvent solid और solvent ratio अगर clear नहीं हो तो सही नहीं हो तो आपका rate of maceration decrease होगा. जैसे अगर yield decreases with the constant quantity of solvent, आपके अगर drug की constant solvent की quantity बहुत constant है और आपकी जो drug का proportion है वो increase ज़्यादा है तो rate of maceration decrease होता है. Dissolution from disintegrated cell, that is particle size, बहुत important है. इसलिए जब भी हम extraction करने जाते हैं तो we make sure that comminution जो size decrease जो matter है fine कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा fine है या कि सेल की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है, केकिंग हो जा रही है ना, तो ऑप्टिमम साइज कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टीपिंग एंड स्वेलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, capillary dilation and increase in diffusion rate. Okay. Next is diffusion from intact plant cell. Solvent must be able to solubilize substance. Temperature increase solubility and decrease the viscosity. Temperature increase the solubility, that is diffusion constant, and decreases the viscosity. pH value influence the selectivity of extraction, that is qualitative and quantitative. Interaction of dissolved constant with soluble support medium material of the plant and degree of lipophilicity. Effect of addition of surfactant, salt and co-solvents. So these are the different factors which are going to affect the maceration process. Now modified maceration. Okay, this type of maceration, unorganized drugs are used which have no cellular or tissue structure. Okay, example gum resins, oleogum resins, इन सब के लिए हमें organized drug के लिए modified extraction method करना होता है. Here the unorganized drugs are used because in short time complete reaction not takes place because of no cellular structure is in organized drug. Soluble component directly exposed to the menstruum, so the process is quicker. Here the whole process is like simple meshing, but the final product is not collected by pressing the mark, but it is adjusted by definite volume. ना difference बस इतना ही है modified में कि जहाँ maceration में पहले mark को press कर रहे थे, and I know many of you were not in the yesterday's class, so let me tell you what is mark. See, menstruum is the solvent used for the process of extraction, and the drug and the we can say solid part. तो जब हम ड्रग को सॉल्व में डिप करके रखते हैं, मैसरेट करके रखते हैं, आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ टाइम हम ड्रग को छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. जो फिल्ट्रेट ऊपर आया, जो छन के ऊपर आया, दैट इज व्हाट इज मार्क. ओके, MARC है ना. मॉडिफाइड मैसरेशन में डिफरेंस इतना ही कि जो मार्क है हम उसे प्रेस करके नहीं निकालते हैं, तो स्क्वीज नहीं किया जाता है,
एंड जो उसका फाइनल वॉल्यूम में एडजस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से किया जाता है. Multiple maceration. The aim of multiple maceration is to achieve maximum extraction by using the proteins of the total volume of menstruum for successive maceration. The volume maceration calculated as it is employed as designed maceration vessel with arrangement of connecting it to volume line. Modification increases permeability of cell wall and considerably facilitates extraction in much shorter time. Merits: small size particle को आप easily macerate कर सकते हो. Strong swelling properties और high mucilage वाले substances को macerate कर सकते हैं. Energy saving process है. Demerits क्या है? Not exhaustively extract the drug. जो drug रहती है ना वो बिल्कुल exhaust नहीं होती है ना. बहुत सारी drug ऐसी जो macerate करके drug को active concentrate निकाल लिया जाता है, पर उसमें कुछ % extract रह जाता है जो हम ड्रग को फिर ऐसे ही ड्रग उसको सेल की जाती है एग्जॉस्टेड सम बिकॉज इट हैज सम लिटिल अमाउंट ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल. इट इज वेरी स्लो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है. यू हैव टू कीप द ड्रग फॉर 3 days 7 days, whereas yours and rest of the process when you go for decoction or infusion or other method, it is little quite faster process. सॉल्वेंट रिक्वायर्ड इज मोर. ओके, जब भी सॉल्वेंट रिक्वायर्ड मोर है बिकॉज आपको सॉल्वेंट को उसके अंदर अच्छे से डिप करके रखना है ना, और तो इसमें सॉल्वेंट क्वांटिटी ज्यादा लगती है. अनदर मेथड इज पर्कोलेशन. Percolator, this is percolator. It is a conical vessel, you can, and a steel conical vessel, and here is the knob, and it's cylindrical is also available, and where you have, and this is the lid where it is covers the percolator. Percolation, it is a continuous downward displacement of solvent through the bed of drug material to get extract. Okay, continuous downward displacement method है जिसमें जो solvent है वो continue आपके percolator में से धीरे-धीरे move करता रहता है और drug को extract करने के लिए. Most frequently used to extract active ingredient in the preparation of tincture and fluid extract. बहुत frequently use किया जाता है tincture के लिए, fluid extract के लिए. Short successive maceration process है ना, और जो apparatus यूज करते हैं परकोलेटर है. नैरो कोन शेप वेसल, ओपन एट बोथ एंड्स, वो दोनों तरफ से एंड से खुला हुआ रहता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू पैक द परकोलेटर. सो परकोलेटर में सबसे नीचे जो माउथ ओपन रहता है ना, ये नॉब के जस्ट ऊपर, वहां पे कॉटन वूल से इस माउथ को क्लोज किया जाता है और ड्रग को अकॉर्डिंग टू साइज, पार्टिकल साइज, इसको फिल किया जाता है. कोर्स, देन फाइन, एंड देन द फाइनेस्ट वन इज अपर. Okay, then your filter paper is placed, then your menstruum solvent system, solvent इसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे solvent को space मिलता जाता है वो धीरे धीरे इसमें से displace होना शुरू होता है और धीरे धीरे करके ड्रग एक्सट्रैक्ट होती जाती है. जैसे जैसे ड्रग एक्सट्रैक्ट होती जाती है हम ओपन करते हैं, नॉब को ओपन करके एक्सट्रैक्ट को निकाल लेते हैं. साइज रिडक्शन सबसे पहला स्टेप है. इफ यू वांट टू गो फॉर द परकोलेशन, ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड सब्जेक्ट टू सूटेबल डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, यूजुअली कोर्स पाउडर टू फाइन पाउडर, है ना. आपको जो साइज रिडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको पैकिंग कैसे करनी है कोर्स पाउडर से लेके फाइन पाउडर तक. उसकी वजह है कि कोर्स पाउडर जब नीचे रहेगा, सबसे लोएस्ट रेंज में रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए मैक्सिमम टाइम मिलेगा, है ना. ड्रग सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट होने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो जितने उतनी ड्रग सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आके जल्दी एक्सट्रैक्ट हो पाएगी. Imbibition is during the imbibition the powder drug is moistened with suitable amount of menstruum. ड्रग को suitable amount of menstruum के साथ moist किया जाता है and allowed to stand for 4 hours in a well closed container. That is imbibition. Packing, after imbibition the moist drug is evenly packed into the percolate. Evenly packed किया जाता है percolator के अंदर. Maceration, after packing sufficient menstruum is added to the saturate the material. Percolate is allowed to stand for 24 hours to macerate the drug. And final step is percolation. The lower the tap is opened and the liquid collected there is allowed to drip slowly at the control rate until third, fourth volume of the finished product is obtained. So this is percolation. So these are the steps. First is size reduction, imbibition, packing, maceration, and percolation. Types of percolation: simple percolation and modified percolation. Simple percolation, drug
200 gram, imbibe for 4 hours, then macerate for 24 hours, percolation and percolate in 3/4 of the volume of the finished product. Example, tincture of belladonna, tincture of cardamom, even your orange tincture, ginger tincture, they are prepared with the help of percolation. Modified percolation. Repeated percolation is most effective than simple maceration. This is called multiple maceration, solvent divided into equal multiple time, considering the solvent retained by the plant tissue used to prepare the concentrated preparation. So depending upon कि जो drug है वो कैसी है ना, कुछ drug को बहुत कम quantity leafy drug है और soft tissue है तो उसे कम चाहिए, पर hard tissue है तो solvent ज़्यादा चाहिए. तो सॉल्वेंट को मल्टीपल टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि कितने कितने देर में उसको सॉल्वेंट को ऐड करना है और उसी परकुलेटर में मल्टीपल टाइम उसको रन किया जाता है. एंड दिस इज रिवर्स परकुलेशन. In case of extraction done through general percolator, at last evaporation is done under reduced pressure equipment like climbing evaporator to the consistency of soft extract, such that all the water is removed. Then it is dissolved in the reverse portion. Then it is dissolved in the reverse portion, which is strongly alcoholic, and equally dissolve the evaporated portion with any risk of precipitation. Merits: require less time than maceration. Maceration से कम टाइम लगता है. और जो थर्मोलोबाइल सब्सटेंस है जो हीट सेंसिटिव है उन्हें हम इजीली इस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. डीमेरिट्स: रिक्वायर्स मोर टाइम देन सॉक्सिलेशन. एक सॉक्सिलेट जो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेटर, उसके कंपैरिजन में बहुत टाइम लगाता है, solvent required ज़्यादा है, and I cannot say that skilled person, but yes, you should know how to fill the percolator. Okay, just not कि drug को भर दिया लगा दिया, ऐसा नहीं है ना. तो little skill is required. Difference between percolation and maceration. Time consume also extract is not complete. Time consuming है, extraction complete नहीं होता है. Short time है, more complete extraction. Does not require any skilled person. आप आलू को क्रश करो, सॉल्वेंट में बंद करके डब्बे में चैम्बर में ग्लास चैम्बर में पैक करके रख दो, मसरेशन हो गया. पर परकुलेशन केस में you need to have the skill. For certain substance which is very less solvent that requires only prolonged contact with solvent. and कुछ substance ऐसे हैं जिनको बहुत less soluble solvent चाहिए, soluble में less soluble रहते हैं, उन्हें लॉन्ग प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट चाहिए. तो मैसरेशन इज मोर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की इतनी देर में वो सॉल्युबल में लेस सॉल्वेंट है, बट उसको हम इतने लंबे टाइम पे छोड़ें तो एक्सट्रैक्ट हो सकता है. स्पेशल अटेंशन भी पेड ऑन पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज का बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन है इसमें. आपको परकुलेशन को फिल करना, उसको पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सुटेबल मेथड फॉर लेस पोटेंट एंड चीप ड्रग. बहुत सुटेबल मेथड है जो बहुत लेस पोटेंट ड्रग है ना, और चीप ड्रग्स के लिए आप आसानी से मैसरेशन में जाओ, कोई आपको उसके पीछे you don't have to look for the drug, you don't have to check whether the solvent is being lost, or you have to make sure कि you have to complete the process today itself, or it is going to be over within the 7 hours, then you have to just leave the drug for 3 days, 7 days. Suitable method for potent and costly drug. Okay. Now this is oxalation. We have already discussed this in our practicals, but since we are dealing with the process of extraction, so here this is the oxalation apparatus, and this is the round bottom flask, and where you have to place the sample, and this is the siphon tube from where the extract passes from again back to the round bottle flask. This is the thimble region where you have to place the drug. This is side tube. This is your condenser, water inlet and water outlet. Okay, so these are the three parts of oxalation. Here in this part where you can see the bubbles here, that there are three important action takes place. First, here when the solvent gets evaporated, the vapors of the solvent from here the side tube passes to the condenser, where it get contact with the cold water, get condenses. The first step here, the condensation takes place, and once the condensation is done, here the solvent is allowed to percolate. What is percolation? Is a downward displacement of the solvent along with it in the drug. तो धीरे धीरे आपका जो सॉल्वेंट है वो परकुलेट होता है, एंड देन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस. और जैसे जैसे ड्रग एक्सट्रैक्ट होती जाती है साइफन ट्यूब से पास होता है. तो हम जब एक्सट्रैक्टेड साइफन ट्यूब से पास होते हैं हम कहते हैं 1 साइफन, 2 साइफन.
है ना, जो ड्रग कितनी कैसी ड्रग है, उसमें कंटेंट कैसा है, कितना टाइम लगता है, उसके लिए हम सॉक्सिलेट साइक्लिंग साइकिल अलग अलग होती है, किसी में 16 साइकिल करना है, 14 करना है ना। तो क्या किया सबसे पहले, जब पैकिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले तो यू हैव टू क्लीन ऑल दी apparatus, यू हैव टू प्लेस दी पर पोरोसिलिन के टुकड़े जो रहते हैं वो आपको राउंड बॉटल फ्लास्क में डालना है, सॉल्वेंट ऐड करना है। राउंड पोरोसिलिन के जो पीसेस हैं यूजुअली इसलिए डाला जाता है टू अवॉइड बम्पिंग, बॉइलिंग जब होता है तो बम्पिंग तूफान आने से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर आपका ये जो थिम्बल ड्रग एरिया है उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप साइफन ट्यूब को पैक करते हैं, आपको यू हैव टू प्लेस अच्छा कॉटन वूल टू कवर दिस साइफन ट्यूब माउथ, बिकॉज जब आप ड्रग को, इसलिए ड्रग को थिम्बल में रखा जाता है, पैकिंग करके ड्रग को रखा जाता है, बट स्टिल टू बी वेरी प्रिकॉशनरी, टू बी केयरफुल, आपको यहाँ पे कॉटन वूल लगाना जरूरी है, ताकि आपका जो ड्रग है वो स्मॉल जो पार्टिकल्स है वो साइफन ट्यूब को चोक ना करे। देन यू हैव टू प्रिपेयर दी थिम्बल with the help of a cotton cloth or with the filter paper, and you have to place the drug in this thimble with a coarse fine drug in this thimble, and then you have to place the condenser where inlet and the outlet of water। उसके बाद आप जैसे आप सॉक्सिलेशन स्टार्ट करेंगे, वैसे आपकी जो ड्रग है वो सॉल्वेंट है वो वेपर बन के जाएगा, कंडेंस होकर ड्रग पे गिरेगा और ड्रग एक्सट्रैक्ट होगी। What is important here to notice that here you cannot use water. Okay, what you need to have the solvent which are volatile in nature, because जब तक अगर solvent का nature volatile नहीं होगा तो solvent evaporate नहीं होगा, so vapor condition में आना चाहिए, है ना। और ड्रग कैसी है, ड्रग वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंसिस्टेंट नेचर वाली ड्रग है। जब जब ड्रग एक्सट्रैक्ट होकर आपके साइफन ट्यूब से राउंड बॉटल फ्लास्क में आ रही है, हर बार ओनली द प्योर सॉल्वेंट, फ्रेश सॉल्वेंट इज गोज, है ना, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है जो वेपरेट हो रहा है, ड्रग आपकी राउंड बॉटल फ्लास्क में रिमेन रहती है। Oxidation is called as a cold process of extraction. Why cold process of extraction? Why not hot process of extraction? Just because that solvent is going in a hot process condition, boil होके जा रहा है, it is not called hot process of extraction, because जब भी solvent आ रहा है ड्रग के कांटेक्ट में वो कंडेंस हो जाता है, that's why oxidation is known as cold process of extraction. So this is for today, and we are going to continue this topic later in this class. Thank you.